So let's start the NCERT question answers of the chapter combustion and flame. So list conditions under which the combustion it can take place. So you have to give the required conditions for the combustion process. Yes, Akul? Important conditions for combustion are as follows: oxygen, ignition temperature, and combustible substance. Very good. So we discuss the triangle. Okay. So the combustion triangle. यहाँ पर हमें combustion process के लिए क्या-क्या चीजें important है? So for bringing the combustion process, we will be needing oxygen. Secondly, we need a combustible substance. And the third is ignition temperature. So the sufficient temperature at which the substance it starts burning. Okay, that is the combustible. Ignition temperature, combustible substance, and oxygen. These are the three important conditions in order to do the combustion. Okay, fill in the blanks. G. Arish, you have to give the answers of fill in the blank. Burning of wood and coal causes dash of air. Pollution. Very good. So burning of the wood and the coal, it causes pollution of air. Right? So the second one, a liquid fuel used in homes is called LPG. LPG. What is the full form of LPG? Liquefied petroleum gas. Very good. Liquefied petroleum gas. Okay. So third part of this, fuel must be heated to its dash before it starts burning. Ignition temperature. Very good. So we must heat it to its particular ignition temperature. Ignition temperature के पहले ये burn नहीं करेगा. Okay, so we must heat it to the ignition temperature. Fire produced by oil, it can't be controlled by. Yes, Arish? जो ऑयल से फायर होती है वो आप किससे कंट्रोल नहीं कर सकते? वाटर. वेरी गुड. ओके, सो रीजन व्हाई वी कांट कंट्रोल इट विद वाटर? हाँ जी हरीश, क्या रीजन है? ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. ऑयल जो है वो पानी पे फ्लोट करता है. इट इज नॉट मिक्सिंग विद. ठीक है, तो ऑयल जो है वो अपनी सेपरेट लेयर बनाएगी. अगर आप उसके ऊपर वाटर डालोगे तो वाटर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज ऑयल इट विल बी फॉर्मिंग इट्स सेपरेट लेयर. ओके, एंड ड्यू टू व्हिच they don't, right, both they don't mix with each other, and thus the fire it can't be controlled. Okay, so this is the reason why we can't use water for the fires that are actually caused by the oil. Right, very good, Arish. Okay, yes, Karanya. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our city. Yes, Karanya. The use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities as it is a Karanya, you speak louder, please. Karanya, you can speak a bit louder. The use of CNG in automobile has reduced pollution in our cities as it is a quality fuel and has some benefits. It gives out less carbon dioxide gas, carbon monoxide gas, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide, which is beneficial as they play a crucial role in global warming and acid rain. It leaves behind no residue after its combustion. So, okay, so you are saying that the amount of gases, they are actually reduced and the unwanted carbon particles are reduced. Very good. Okay, yes, Prabsharan. Yes, Prabsharan. Prabsharan.
जी नंदिनी बोलिए बेटा। यस नंदिनी। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, आंसर दीजिए थर्ड का Yes, क्वेश्चन। ma'am. हाँ जी। LP is from no production. It Your voice is lagging बेटा, your voice is lagging. जी अकुल बोलिए बेटा, आप बोल दो अब। Ma'am, sorry, I don't know this answer. यस अकुल। मैम मेरे को नहीं आता है। So explain how the use of CNG has reduced pollution. Pollution causing agents क्या क्या हैं आपके? Yes अकुल। चलो ओके दिया, you can give the answer दिया। दिया you can give the answer बेटा। ओके तो मैं ही दे देती हूँ फिर अब। So how the use of LPG or how the use of CNG in automobiles has reduced the pollution? See, the pollution it is due to the incomplete combustion. ठीक है, pollution तब होता है जब incomplete combustion होती है, because in the complete combustion no byproducts are there. Okay, so whenever there is a case of incomplete combustion, you will see there are some residue that are left. Residue in the form of unburnt carbon particles that we called as soot. ठीक है, suspended particulate matters जो हैं SPM, they are also released along with many of the harmful gases. Okay, so whenever there is incomplete combustion, these all things they are basically released in this process, right? But CNG it is a cleaner fuel. CNG, that is the compressed natural gas, it is actually a cleaner fuel that undergoes complete combustion. Okay, so CNG being a cleaner fuel, it leaves no residue, no unburnt carbon particles and harmful gases are released. ओके तो ये जितनी भी चीजें हैं जो इनकम्प्लीट कंबशन से आती हैं वो नहीं आएंगी। व्हाई? बिकॉज सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। right, it is having high calorific value, it undergoes complete combustion, कंप्लीट कंबशन अंडरगो करता है, क्लीनर फ्यूल है, हाई कैलोरिफिक वैल्यू है, and whatever the byproducts in the form of residues, SPM and harmful gases, they are very less in this case. ओके तो इस केस में ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स आते हैं ये बहुत कम है। ओके सो अनडिजायरेबल गैसेस दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस। Clear? Next, you have to give reason. Sorry. Next is you have to compare LPG and wood as fuel. LPG and wood as fuel. जी अनन्या बोलिए बेटा। Yes, अनन्या? ma'am. The first property, ma'am, आवाज आ रही है? Yes बेटा, you are audible. Okay, energy. LPG produce more energy. In case of wood, wood produce less energy. Pollution, LPG produce less pollution, and Just wood a minute produce बेटा, more pollution. धीरे। Okay, the first one is about Ananya. Just a minute. The first point is about the energy or high calorific value. Yes. That means the released energy is more in case of LPG than in the wood. Okay, so wood is having less calorific value. Next is pollution. Next is
Pollution. Pollution. Okay. LPG, it causes pollution. It causes less pollution. Okay, it causes less pollution. Why? Because And would cause they are less released. Okay, and would cause more pollution. right. So it causes more pollution than LPG. Next is residue. LPG leaves no residue and would Very good. release ash residue. So LPG don't release any residue or byproducts. They are released very, very less. But the byproducts, they are more in case of wood. It leaves residue. Next is storage and transport. Okay. LPG easy to store and easy to transport. Easily transported and stored. Store easy to use, easy to store. ठीक है? And in case of आप easily transport कर सकते हो in the form of compressed form. ठीक है? तो compressed form में आप इसको store कर सकते हो. And for the wood, need more space and need more things, means need more vehicles to transport. right? So it is difficult to transport and store. Right? हाँ जी, next. So 4 points अभी तक कर लिए हैं. और कोई? और दोनों की स्टेट स्टार्ट कर लेते हैं. We can talk about their states. LPG is a liquid fuel. And Yes, wood is ma'am. a solid fuel. Okay. Wood is a solid fuel. We can talk about their ignition temperatures also. कि किसका ignition temperature ज्यादा है, किसका ignition temperature कम है. हाँ जी. Yes, Ananya, for the LPG is having low or high ignition temperature? Ananya, LPG is having low or high ignition temperature? Yes, Ananya? Ma'am, LPG is having high ignition temperature. LPG is having high ignition temperature. No. LPG having low and wood having high ignition फिर temperature. आपने पहले ऐसा क्यों कहा? Ma'am, वो confusion हो. Yeah, okay. Okay, for the sixth part of LPG is having low ignition temperature. That means it can be burned very easily. Okay. And for the wood is having high ignition temperature. That means it is very difficult to burn a log of wood. Okay, तो जब तक आप उसको sufficient ignition temperature नहीं provide करोगे, तब तक जो आपकी wood है, it will not burn. So it is having high ignition temperature. Okay, so 6 points. I guess these points are enough for the differences. Okay, any other point you want to add, beta? Any other point? Anyone who can add? ठीक है? Okay, चलिए. So this is the difference between the LPG and the wood. LPG is having high calorific value, wood is having low calorific value. It causes less pollution, it causes more pollution, smoke and byproducts you can anything include. No residue, मतलब burn completely. Okay, so complete combustion takes place in case of LPG. No residue means complete combustion. Wood की incomplete combustion होती है. It can be easily transported and stored. Okay, that is difficult to store and transport. This is a liquid fuel and that is a solid fuel. This is having low ignition temperature, that is having high ignition temperature. Okay. Coming to the next, fifth question, you have to give reason that why water is not used to control fire involving electrical equipment. तो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पर हम वाटर को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश द फायर? यस, यस दिया.
morning, ma'am. Ma'am, my voice is audible. Yes, beta, you are audible. Because water is a good conductor of electricity. It allows to pass an electric current through it and may give electric shocks to person who is trying to extinguish the fire. Very good. So water is a good conductor of electricity. Dear, you can mute yourself. Water being a good conductor of electricity, it will allow electric to pass through it. Okay. So whenever you are using water for controlling the fire, water on touching with the electrical equipment, it will undergo the current or it will pass the current, okay, through it. So due to which the person who is controlling that fire, he will get the electric shock. Okay. So उस person को shock लग सकता है due to the conduction of the electricity through the water. Okay, so that's why the water is not advised to be used on electrical equipment and on the oil also. ठीक है, तो हम oils में भी नहीं use करेंगे पानी को. LPG is a better domestic fuel than wood. ये हमने अभी पढ़ लिया हुआ है. We have discussed the uses of LPG and wood. ठीक है, तो आपने वही सारे uses जो हैं अब वो explain कर देने हैं दोबारा. Okay, so it is having high calorific value LPG की, right? लेस रेजिड्यू देता है, हाई वैल्यू है, लेस स्मोक कॉजिंग है. ओके, तो इग्निशन टेम्परेचर लो है इसका. तो ये सारे पॉइंट्स आपने अगेन रिपीट कर लेने. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट की पार्ट ऑफ दिस, पेपर बाय इटसेल्फ कॉजेस कैचेस फायर इजीली. कहते हैं कि जब आप पेपर ले रहे हो, राइट, सिंपल पेपर यू आर टेकिंग, दैट इजीली कैचेस फायर. मैंने दिखाया भी था आपको. हाँ जी, फिल्टर पेपर पे दिखाई थी ना ये एक्टिविटी. The filter paper, it catches the fire very quickly. But whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. तो यही अगर आपने पेपर लिया है और उसके आसपास एल्यूमिनियम की पाइप जो है वो रैप कर दी है, okay, then that paper is not able to catch fire easily. Now what can be the reason for this? हाँ जी, इसका रीजन क्या हो सकता है बेटा? Yes, Arish? Yes, ma'am. When paper has very low ignition temperature, so Very it good. catches fire very easily. When an aluminium pipe is wrapped around it, it does not catch fire because aluminium pipe makes the ignition temperature high. Because aluminium pipe, क्या होगा बेटा आपने लास्ट में? एल्यूमिनियम पाइप. बोलिए. And because aluminium pipe makes the ignition temperature high. Okay, so paper is having low ignition temperature, so that's why it catches fire easily. So if you remember, when we do the activity of the paper with the water, ठीक है, तो जब मैंने एक वेट पेपर लिया था उसमें आप देख सकते थे कि उसने फायर कैच नहीं की इजीली. Why? Because ignition temperature is being raised, right? So how it is being raised? Actually, whatever the heat you are supplying, okay, so whatever the heat we are supplying, heat supplied is going to the aluminium pipe. तो वो सारी की सारी हीट जो है वो कहाँ पर जा रही है? वो एल्यूमिनियम पाइप में जा रही है. जैसे हमने वाटर वाली एक्टिविटी की थी, तो जो भी पेपर से हीट थी वो सारी वाटर में जा रही थी. एंड अल्टीमेटली इफ यू टेक द वाटर इन द कप, ठीक है, तो वो वाटर जो है वो धीरे धीरे बॉयल होना शुरू हो जाएगा. बट इन द सिमिलर वे हेयर द एल्यूमिनियम पाइप इट of all the heat that is actually we are giving to the paper. So that's why the paper wrapped with aluminium, it don't catches fire easily. Clear? Okay, chaliye next. Make a label diagram of candle flame. So this diagram you have to make. Okay, so candle flame की आपने सारा diagram बनाना है. You have to show the luminous, non-luminous, dark zone, blue zone with proper labeling of each and every part. ठीक है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है. किसको आप ल्यूमिनस जोन कह रहे हो? ल्यूमिनस जोन जो है वो कंप्लीट कंबशन का जोन है या इनकम्प्लीट कंबशन का जोन है. तो ये सारे पार्ट्स आपने प्रॉपरली लेबल करने हैं. ओके, so you have to properly label all the parts.
राइट। तो बाहर वाला जो है वो आपका दैट इज द ब्लू पार्ट, दिस जोन इज द कंप्लीट कंबशन जोन। ठीक है, हर एक पार्ट के लिए आपने पहले तो ये लिखना है कंप्लीट कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन है। दिस इज द नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, एंड द थर्ड थिंग यू हैव टू राइट इट्स कलर। तो ये तीन चीजें आपने सबके लिए लिखनी है। ओके, सिमिलरली यू विल राइट फॉर द इनकम्प्लीट वन ल्यूमिनस जोन एंड द येलो वन। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वीक पार्ट आ जाता है, राइट। तो वीक पार्ट जो है दैट इज एक्चुअली द डार्क जोन एंड दैट मार्क्स द नो कंबशन जोन। तो आपने ये सारी चीजें हर एक के लिए लिखनी है, these three things, next these three things for the yellow zone and other three things for the dark zone। ठीक है, तो इस तरह आपने प्रॉपर कैंडल के जो फ्लेम का डायग्राम है वो लेबल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड। बेटा किस यूनिट में हम कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस करते हैं, इन किलो जूल पर केजी। ओके, तो किलो जूल पर केजी में हम कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। इट इज डिफिकल्ट, सॉरी, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। यस Saranya, how carbon dioxide is able to control fire? As carbon dioxide is heavier than oxygen, it forms a blanket around fire, because of which the supply of air is stopped. It brings down the temperature of the burning substance. In these ways, it plays a significant role in controlling fire. So basically what happens in this case is carbon dioxide, it acts as a blanket over the oxygen। ठीक है, फायर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ऑक्सीजन को क्या कर दें, रिमूव कर दें टोटली, या हम अपने कंबस्टेबल सब्सटेंस को रिमूव करवा लें, और आइदर वी कैन लोअर द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, लोअर का मतलब क्या है कि हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर को यहाँ चेंज कर दें। तो फ्यूल को हम कहीं पे ले जा नहीं सकते, द सब्सटेंस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कट द ऑक्सीजन सप्लाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ओवर द ऑक्सीजन बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवियर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हैवियर है, इसलिए वो एज अ ब्लैंकेट की तरह काम करती है उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स but dry leaves catches fire easily। जी अकुल, why dry leaves they catch fire very easily? Ma'am, it is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily because oxygen is present in excess amount in green leaves, but not in dry leaves. So, due to the oxygen is an important condition for combustion. So, अकुल, due to the lack of अकुल, एक ड्राई है और एक वेट है। ड्राई वाला जल्दी फायर कैच कर रहा है, वेट वाला नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेट वाले के साथ क्या हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। The dry leaves, they will be having the low ignition temperature, that's why they are burning very very fast, but the wet leaves, they are having the high ignition temperature as they are wet, so that's why they don't burn very easily। Okay, is it clear? मैम, पर ये ऑक्सीजन वाला नहीं हो सकता। नहीं बेटा, ऑक्सीजन उन्होंने कहा है कि one is dry leaves and the second is heap of green leaves। ग्रीन लीव्स में एक्सेस वाटर होता है, ऑक्सीजन तो दोनों को ही मिलेगी बेटा, ड्राई लीव्स को भी ऑक्सीजन मिलेगी, जो वेट वाले हैं उनको भी मिलेगी, बट यहाँ पर हम वाटर की बात करेंगे। द ग्रीन लीव्स दे आर हैविंग मोर मॉइस्चर और वाटर कंटेंट एंड द ड्राई लीव्स दे आर हैविंग लेस वाटर कंटेंट। ओके, हाँ जी, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ओके, which zone of flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? You can give your answers in the chat box. Which zone the goldsmith use? So he uses the zone, पूछा है zone, not color. Which zone? Outermost zone, non-luminous zone, that marks the complete combustion. Okay, outermost zone or the non-luminous zone of the candle, because that is actually the hottest part.
तो कैंडल फ्लेम का वो सबसे क्या है, हॉटेस्ट पार्ट। So that's why the goldsmith he uses this part. ठीक है, सबसे ज्यादा हॉट होने के कारण वो उसको यूज कर रहा है मेल्टिंग पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an experiment 4.5 kg of fuel was completely burned. Heat produced was measured to be 18000 kilojoules. Calculate the calorific value of the fuel. वो आपको हीट दी हुई है and you are given the mass. तो calorific value किसकी इक्वल होगी बेटा? We have studied the units of calorific value. तो calorific value की units क्या हैं? They are kilojoule per kg. तो यानी कि अगर मैं ऊपर heat लिखूंगी, if I write heat here and mass, कितना दिया हुआ है आपको? What is the mass? 4.5. So just solve it and give me the answer. Yes. So the answer is 40,000. 40,000 kilojoule per kg. Okay. So that is 40,000 kilojoule per kg. Next question. Can the process of rusting be combustion? क्या हम rusting process को combustion कहते हैं? हाँ जी, can we call the rusting process under the category of combustion? Yes, Diya? Yes, because the rust is formed when iron slowly combines with the oxygen present in air to form iron oxide. The process of rusting of iron is an example of slow combustion. The rusting liberates very little heat but no light. Very good. So she has explained very well that rusting, it always leads to the formation of basically iron oxide. Okay. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, the iron object when it takes the oxygen, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बर्निंग के लिए तैयार है वो, ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिल गई है, and with the proper atmospheric condition the rust it actually takes place, and in the formation of rusting some amount of heat is also liberated. So yes, definitely we call this process as combustion process. ठीक है, कंप्लीट जल्दी से बर्न नहीं करेगा, जल्दी से हीट नहीं आएगी, बहुत जल्दी प्रोसेस नहीं होगा, बट इट कैन बी अ स्लो कंबशन प्रोसेस, धीरे धीरे हो रहा है. ओके, so yes, rusting can be called as under the category of slow combustion process, right? Coming to the next, Adiba and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. पानी को हीट करना था, ठीक है. Adiba she kept the beaker near the yellow part and Ramesh put in the outermost part. तो उसने एक में येलो पार्ट में रखा है, एक में ब्लू पार्ट में रखा हुआ है बीकर. Whose water will heated in a shorter time? किसमें पानी जो है वो जल्दी जो है वो हीट करना शुरू करेगा, रमेश के बीकर में या अदीबा के बीकर में? Yes, so Ramesh water will heat faster because the beaker in which Ramesh has taken the water, he has kept that beaker in the blue zone of the flame. ठीक है, तो उसने ब्लू जोन में रखा है, that is actually the hottest part of that. तो इसीलिए जो रमेश का बीकर है वो जल्दी हीट अप होगा और उसमें जो पानी है that also gets very very hot.